kids, and a very warm welcome in our today's video. So in this video we are going to learn about the structure of an atom. Atom basically क्या चीज है? When we look about atoms or we search on the internet या किसी भी किताब में हम देखें तो we came to know about a sentence that atom is the building block of everything, or in other words atom is the building block of matter. Now building block का मकसद है कि अगर कोई चीज बनाई जाएगी तो उसमें सबसे छोटा यूनिट जो होता है जिससे कि वो बनाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ रूम, तो उस रूम के अंदर सबसे छोटा बिल्डिंग ब्लॉक या तो उसका एक ब्लॉक होगा, सीमेंटेड ब्लॉक, ईंट जिसे कहते हैं हम, या फिर इफ वी कैन से अबाउट द स्मॉल रॉक्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द ब्लॉक, दैट कैन आल्सो बी इट. सो in the same way the matter is composed of atom, and atom is the smallest particle of anything. Now look at the view of some of the examples that we are having and look at it as a closer view. तो यहाँ पे हमारे पास तीन तरह की examples given है, in solid, liquid as well as in gas. For solids we are having the example of sodium chloride, that is table salt जो नमक हम खाते हैं regularly. For liquids we are having water, that is H2O, and for gases we are having oxygen gas that is present in our environment and that we inhale almost every time. So these are the components which are composed of these small ball-like structures which you can see right now, and these are the atoms. So अब यहाँ पे तो हमें दिख रहा है कि ये ball-like structure है. Obviously this is not how an atom looks like, but आपकी understanding के लिए यहाँ पे बना दिया गया. So let's have a closer look at how these atoms look like. अगर एक एटम को zoom in कर दिया जाए या magnify कर दिया जाए तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा. Now this is also not a perfect representation of how the modern quantum mechanics mechanical model of atom looks like, लेकिन इसको आसान करके दिखाया गया है. So here we are having a cluster shaped group of particles present in the center, and then some of the particles which are actually orbiting around this cluster. This line which you can see, it is an imaginary line. ये एक real line नहीं होती है, एक real pathway नहीं होता है, या structure में ये मौजूद नहीं होता है. This is the imaginary line which is formed when these electrons move, and these electrons move actually very fast. तो क्या होता है कि जब electrons move करते हैं, for example एक अंधेरे कमरे में आप अगरबत्ती लें और उसको बहुत तेजी से move करें, तो what you will actually see is not that lit, जो अगरबत्ती की जो टिप होती है जो लिट हुई होती है, आपको वो नजर नहीं आएगी. आपको एक्चुअली एक सर्कल या जिस भी पैटर्न में आप उसको मूव कर रहे होंगे वो नजर आएगा if you really move it very fast. So these are actually not the real lines but the imaginary ones. So there are three of the particles present in an atom, and as we look at the atom very closely we came to know कि atom खुद जो कि दूसरे सब्सटेंसेस को बना रहा है और बिल्डिंग ब्लॉक है उनका, और बहुत ही सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उस सब्सटेंस का, खुद वो एटम भी और मज़ीद छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना है. इन दीज पार्टिकल्स आर दे हैव सम नेम. सो दिस थिंग एट द सेंटर, दिस क्लस्टर शेप थिंग, दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियस. सॉरी, this is called nucleus. So this nucleus consists of even smaller particles. As you can see, there are two of the particles present in this structure or in this cluster, and these are called the substances which are, there are different colors now, so let's color code them. These substances like this, जो इस तरह के आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहे होंगे, these are called protons, while the structures looking something like this, obviously ये इस तरह से दिखते नहीं हैं, just representation को अलग करने के लिए, आपको अलग अलग particles दिखाने के लिए इस तरह से बनाए गए हैं. These are called neutrons or neutron in a singular. And the particles which are moving around this nucleus, these particles are called electrons or singular electron. So these three particles are present in an atom and they make up the structure of an atom.
These particles are charged particles. इन पे कुछ ना कुछ charges मौजूद होते हैं. So for protons they are having positive charge on them, while the electrons are having negative charges on them. अब हमारे पास तो दो ही charges होते हैं, positive और negative. So what about the neutrons? इन पे क्या charge होगा? Neutrons, as the name indicates, resembles to neutral, which means they have no charge on them. So neutrons are basically neutral in nature, which means they are not having any charge on them. Neutrons का काम सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि वो protons को nucleus में hold up करके रखें ताकि एक centralized positively charged hub या center या nucleus बन सके. So यहाँ पे अगर हम बात करें तो protons और electrons they are negative and positive charged particles, means that they are the charged particles. अब किसी भी एटम के स्ट्रक्चर को अगर हम देखेंगे तो we can easily figure out कि यहाँ पे जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही हमारे पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मौजूद होने चाहिए, which means that an atom is always neutral, which means it have zero charge. It does not possess any charge on it. Either it can be of carbon, it can be hydrogen, it can be oxygen, it can be any of the element. लेकिन उसके एटम के ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं होता. They are neutral in nature. Neutral in nature means जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ protons मौजूद होंगे, which means they cancel out the effect of each other, and so the net charge will be zero, or we can also say neutral. अब अगर हम closely इस structure को पढ़ें तो हम ये कहेंगे कि भाई नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस तो आपस में अट्रैक्ट होते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ पुल कर रहे होते हैं. सो व्हाट अबाउट द प्रोटॉन्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स? यानी कि अगर प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं एज दे आर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो पुल कर ले प्रोटॉन अपनी तरफ और इलेक्ट्रॉन आके न्यूक्लियस के साथ अटैच हो जाए? नाउ दिस इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, लेकिन इसके आंसर में एक रीजन है. रीजन ये है कि एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड बहुत ही ज़्यादा स्पीड में मूव कर रहे होते हैं, यानी कि इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है अगर हम चाहें भी तो इनकी स्पीड कम नहीं की जा सकती बहुत ज़्यादा. और इस तेज़ स्पीड की वजह से एज दे आर मूविंग सो फास्ट दे आर अनएबल टू स्टे एट वन पॉइंट. So for the fact that protons are positively charged particles and they are pulling the electrons towards itself, करीब आते तो ज़रूर हैं, लेकिन फिर दोबारा से करीब आते आते क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है तो इसीलिए ये मूव करके फिर दोबारा अपना राउंड कंप्लीट कर लेते हैं. यानी कि ये रहते वही ऑर्बिटल के अंदर हैं, बाहर नहीं जाते. इन दैट केस अगर बहुत ज़्यादा स्पीड अप हुए होंगे इलेक्ट्रॉन्स और उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई पॉजिटिवली चार्ज आयंस या इलेक्ट्रॉन कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स मौजूद नहीं होंगे, तो क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इतने ज़्यादा अपना ऑर्बिटल बड़ा कर लेंगे और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये एटम से ही बाहर चले जाएंगे. तो टू अवॉइड दैट देयर आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इन दैम, दे आर प्रोटॉन्स. हम उनको होल्ड करके रखते हैं इन द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. सो लेट्स हैव अ क्विक लुक एट द एग्जाम्पल्स जो कि हमारे पास हैं. कुछ एटम्स हैं जिनके for example, you have seen carbon. Carbon is an atom. It is an element which is naturally occurring in universe. कार्बन के अंदर अगर हम देखें तो कार्बन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स किस तरह से डिटरमाइन किए जाते हैं. कार्बन इज हैविंग 6 electrons and 6 protons, which means that they are neutral in nature, क्योंकि प्लस और माइनस चार्जेस आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं. What about the neutrons? Well, the neutrons depend on the atomic mass. अब ये atomic mass क्या चीज़ है? To understand that, we have to understand what is atomic number. आप लोग ने देखा होगा कि एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स है
जो कि एक टेबुलर फॉर्म में मौजूद है और स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में मौजूद है, जिसे हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं. It's something looks like this, जिसमें कि number of there are many of the elements which are arranged in the order of ascending atomic number. इसका मतलब ये होता है कि जो उनका हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है उस हिसाब से छोटे से बड़े की तरफ मूव हो रहे होते हैं, छोटे से बड़े की तरफ आगे बढ़ते हुए वो टेबल अरेंज हुआ है. Now the carbon is having the atomic number 6, which means that atomic number is the number of protons, or we can say the number of electrons in any atom. लेकिन number of neutrons के लिए हम क्या देखते हैं? The carbon is having atomic mass of 12. Now what is atomic mass? Atomic mass can be defined as number of neutrons, the number of neutrons which are present in the nucleus of an atom, plus the number of protons which are present in the nucleus of an atom. Let's say this is positively charged. So number of proton और number of neutrons जो होते हैं, अगर उनको ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास atomic mass निकल जाता है. While the number of protons और electrons, कोई भी एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों सेम होते हैं, इसीलिए उनका नंबर रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर को. So to summarize all of this, what we studied in this lecture, first thing is that we studied about the atoms. What are the atoms? Atoms are the smallest particle of anything, matter. Then we studied how the arrangement of atoms are in different types of or in different states of matter, that is solid, liquid and gas. Then we had a closer look on the magnified view of the model of atom. We saw that there are three of the basic subatomic particles present in the atom, that is the proton, neutrons and the electrons. We studied that protons are having positively charged, the electrons are negatively charged particles, while the neutrons does not carry any charge and they are neutral in nature, that is why they are having zero charge on them. Then we also studied that the atoms are always neutral in nature. This means that the number of electrons present in the outer space or the outside the nucleus is always equal to the number of protons present in the nucleus. So this gives the complete atom the neutral charge, that is zero charge. Then we studied about the atomic number, which is the number of electrons in an atom or the number of protons in an atom, because both are same. Then we studied the atomic mass is the sum or the addition of number of neutrons and number of protons present in the nucleus of an atom. So that's all for today. See you inshallah in the next video. Allah Hafiz.